नमस्कार सांग मैंने आज क्लास को आपको स्वागत जनाऊँगी। पूर्व क्लास रे आमे ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन विषय पढ़ी जो थे कि ग्लाइकोलिसिस रो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुए बोली पढ़ी और फर्मेंटेशन रो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस हुए बोली पढ़ी। तेज चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज सेसन टी। आज कंटेंट होची एरोबिक रेस्पिरेशन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम by ITS oxidative phosphorylation. Aerobic respiration. For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. The crucial event in aerobic respiration are आग कहतु आम जो फास्ट पढ़ी ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोलिसिसटा आम सेल रोटी परफॉर्म हुए बोली किए कहींपर आज्ञा से ग्लाइकोलिसिस टी आम साइटोप्लाज्म रे परफॉर्म हुए एवं एबे जो पढ़ा आम क्रेब्स साइकिल सेटा हूँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन ता दीटा स्टेज रे होता है। गोटे हूँ दि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हूँ द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी. The first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. First process means the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms. कोठी होता है ना आम माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे होता है आउ जोटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होके हाइड्रोजन रो हाइड्रोजन फॉर्म होता है आउ ऑक्सीजन होता है से कौन होता है ना एटीपी सिंथेसिस होता है सेटा हूँ इनर मेम्ब्रेन रे होता है जोटा कि आम नेक्स्ट पढ़ा पायरुवेट जोटा कि आम जाने ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस होता है which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol. Cytosol means the aqueous component of the cytoplasm of cell. After it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation means oxidation process that removes a carboxyl molecule as carbon dioxide. After जोटा कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पर पायरुवेट कौन होता है एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस catalyzed by pyruvic dehydrogenase. The reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A. During this process, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid. The acetyl coenzyme A then enter a cyclic pathway, tricarboxylic acid cycle, more commonly called as Krebs cycle, after the scientist Hans Krebs, who first elucidated it. एठी आम डायग्रामेटिकली शो करचे पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस जो जहाँकि मैग्नेशियम आउ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंस रे एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड NADH प्लस H प्लस देजी. नेक्स्ट हूँ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को आम टीसीए साइकिल कहीपर कौन होना टीसीए साइकिल स्टार्ट विथ द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप with oxaloacetic acid and water to yield citric acid. The reaction is catalyzed by the enzyme
citrate synthase and a molecule of coenzyme A is released. Citrate is then isomerized to isocitrate. It is followed by two successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha-ketoglutarate acid, then succinyl coenzyme A. In the remaining step of citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. In the remaining step of a citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. This is a substrate level phosphorylation. In a coupled reaction, GTP is converted to GTP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also, there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus, and 1 point where FAD plus is reduced to FADH2. The continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition, it also requires a regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively. ଏଠି ଆମେ କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ୍ଟି ଦର୍ଶେଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ 4 NAD ପ୍ଲସ୍ FAD ପ୍ଲସ୍ 2H2O ପ୍ଲସ୍ ADP IP ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ 3CO2 ପ୍ଲସ୍ 4 NADH ପ୍ଲସ୍ 4H ପ୍ଲସ୍ FADH2 ପ୍ଲସ୍ ATP ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଏ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଅକ୍ଜାଲୋଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଫା ବିଟୋଗ୍ଲୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ସକ୍ସିନିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେବା ମଧ୍ୟରେ GDPରୁ GTP ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଉ FADରୁ FADH2 ହେଇଛି ସକ୍ସିନିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ମାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଭିତରେ ଆଉ ମାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ଅକ୍ଜାଲୋଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ NAD ପ୍ଲସ୍ T NADH ପ୍ଲସ୍ H ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ପରେ। এই ଡାଇଗ୍ରାମଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ETS and oxidative phosphorylation. The following steps in the respiratory processes are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on to resulting in formation of H2O. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport system ETS, and it is present in the inner mitochondrial membrane. ଏଠି ଆମେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରେ ETSଟି କିପରି ପରଫର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ କାରିୟରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରିୟରକୁ ଯାଇ ATP ଏବଂ ADP ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। এই ଦୁଇଟିରେ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା RQ means respiratory quotient. RQ equal to volume of carbon dioxide divided by volume of oxygen consumed. ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।